If you want to plan, if you're planning for fall, you're welcome. So this is about University of West Florida. Again, my name is Sahil Massey. If you want to get in touch with me, you can get in touch with Shaji, and I will be more than happy to help you. And the university is built for you, and we are welcome. Thank you so much. Thank you so much. क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट. अब जितनी भी देर साहिल ने बात की है यूनिवर्सिटी के बारे में बता, तो क्वेश्चंस आ रहे तो पूछो. I have a question actually here on behalf of this undergrad students. Like I will ask you. Okay. See, majority of there are having their relatives in California. So maximum students are having relatives in California. So why don't they choose like universities at California? Why West Florida now? So yeah. So tell me after listening to Sahil, like have you decided anything? Like so as I have support in terms of accommodation and some known persons which will be favorable for me to stay. So why I have to choose University of West Florida? So have you guys did some analysis about this after this seminar? कुछ समझ में आया आपको? वेस्ट फ्लोरिडा क्यों जाना अभी? So I have my mama in California, brother in Texas. Then why Florida now? Okay, I will ask. मेरे पास एक आंसर रेडी है इसके लिए. Yeah. तो बेसिकली साहिल जो एक्सप्लेन करे फ्लोरिडा के बारे में, मैं इमेजिन कर रहा हूँ खानेपुर में तो 1600 एकड़ वाला कैंपस. एक एकड़ ही कितना बड़ा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने बताया कि फीस है हमारी $12,000. मेरे को जॉब करना नहीं है फुल टाइम, पार्ट टाइम 20 घंटे हफ्ते के. 20 घंटे में भी $15 मेरे को असिस्टेंटशिप में मिल जा रहे हैं पैसे. Yeah. वो यूनिवर्सिटी के अंदर खाना पीना रहना है. अपार्ट फ्रॉम दैट पैसे भी बन जा रहे हैं साल में. पार्ट टाइम करते हैं, नॉट फुल टाइम. 40 घंटे भी काम नहीं करता. जस्ट वो यूनिवर्सिटी जाना है, 2 क्लास अटेंड करना, फिर आधा काम करके आ जाने का. तो अब रिश्तेदार गन भी है तो यही सपोर्ट पूछूंगा मैं, भाई खाना टाइम पे मिल जाएगा और पैसे कहाँ मिल रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में मिल रहा. तो ऑफकोर्स फिर वो ब्यूटीफुल सिटी है, बीचेस वगैरह भी है और वेदर हैदराबाद ही है, इट्स गुड टू सर्वाइव. तो ये मैं एक रीज़न होगा कि भाई सबसे दूर अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी नई दुनिया बना लेते हैं. स्टडी फोकस ऑन स्टडीज़ रहेंगी ना इस पर. ये मेरा आंसर ये रहेगा अगर मैं कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ, वेस्ट फ्लोरिडा में. इसलिए आप लोग का आंसर क्या रहेगा पूछ रहे. Expenses देखो, cross compare करना. So this is something like $15,000 per year, which is your fee. So year or semester, Sahil? Semester, right? Year. So सालाना. year. Yes. So cleared, right? Like 1 year fee is 15,000 rupees, $15,000, which is for 1 year, 2 semesters. Okay. Same fee or same course you cross check in California. So it will be like a double, right? Like within the 1 year of tuition fee, you can complete the studies and you can also pay the living cost, on-campus accommodation in University of West Florida. So however the security then. So security, so we don't know anyone in University of West Florida. How we will arrange ourselves? कोई भी नहीं है. एयरपोर्ट पिकअप कैसे करना, रूम कौन दिखाएगा, और मेस मतलब कैंटीन खाने के इंतज़ाम कौन करेगा. So this is something like which will be taken care by the university. So every university will have certain clubs and organizations for your international students. So you may not have Indian friends very immediately. So you may have this cultural shock, but still that's okay. Like see, you have to explore yourself. Then only like you will be. You cannot depend on anyone, especially in a US, such a big country. You should explore yourself so that confidence will build you in achieving something once you graduate. So you don't expect any support or emotional support or any kind of a support from your relatives or parents once you are onshore. So you do by yourself and go for other university or other place as per my recommendation. Don't expect any spoon feeding from your relatives. Okay, that will help you in making you stronger and confident